what is quality assurance first? Now, what is the quality and what is quality assurance? Anyone can explain me? Do you know anything about the quality assurance in your B.Pharm career? Yeah, MSc, BSc career. Do you know quality assurance, quality control, anything? So, quality assurance Hello. means hello. Yes. Yes, quality assurance means the maintenance of a desired level of a quality in a service or a product. Okay. Yeah, and especially means attention to the every stage of the process of the delivery or a production. Okay. Thank you. Anyone else? So I will explain the quality. I'm agree, completely agree, but it is not 100%. So I will explain the quality. What is quality? Quality means quality attribute. So first, we are working in the production floor, and we're working in the pharmaceutical company. Quality is first because without quality, we can deliver our medicine or our product to market. So what are these qualities? जैसे मैं आपको बोलूंगा in our family, every morning to evening, we are preparing dishes like rice, dal, vegetables. We are preparing. So हम जब घर में माँ को पूछते हैं, माँ मुझे आज अच्छा खाना है, तो माँ क्या करता है? आप लोग के लिए अच्छा खाना बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं? उसका रेसिपी जो होता है, व्हाट आर द रेसिपी रिगार्डिंग फॉर दाल प्रिपरेशन ऑफ दाल, प्रिपरेशन ऑफ चिकन, प्रिपरेशन ऑफ राइस, and every timing, time, processing, all the things should be fixed. 5 minutes means 5 minutes. Boiling time 5 minutes means 5 minutes. And they have the in-house specification. After preparation of food, we are taking the food. During taking the food, that time we are providing our opinion to our mother. That is, uh, it's good. Today the food quality is good and मुझे अच्छा लग रहा है खाने के लिए. इसे डेली बनाओ माँ को आप बोलते हैं. So this is the type of हम लोग assure करते हैं. Those person assuring the quality is called as quality assurance. The team is calling us quality assurance team. We'll go to the next slide. You'll be get easily. Now quality. Just you see what is quality. Quality of first is quality of product. Second is quality compliance. Next is quality decision. And what is quality product? And what is quality compliance? And what is quality decision? I will explain briefly. And quality assurance. Assurance means those assure quality product, quality compliance, and quality decision. To them, we call quality assurance person. Next, first we will go to quality of product. So what is quality of product? How will you ensure the product quality? I have already explained. Our mother is cooking food. We are assuring the food is quality is good or bad. We are assuring after taking the food. The same thing. नमक ज्यादा हो गया तो बोले कि नमक ज्यादा हो गया, आज अच्छा नहीं लग रहा है. चाय में शुगर ज्यादा हो गया, बहुत शुगर हो गया, क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है, चाय का अच्छा नहीं लग रहा है. दैट थिंग मीन्स हम लोग एश्योर करते हैं. तो प्रोडक्ट क्वालिटी मीन्स टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू केमिकल एंड माइक्रोबायल एनालिसिस. तो केमिकल एंड माइक्रोबायल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस क्या है और माइक्रोबायल एनालिसिस क्या है? केमिकल एनालिसिस टू इवैल्यूएट the chemical parameters are within the specification limit. Are you getting me? A specification is there. A specification means, suppose I will explain a chemical parameter pH range. pH हम लोग सब कॉलेज में पढ़े होंगे एनालिसिस में. pH, तो pH का रेंज जो रहता है वो 6 to 8 रहता है. 6.0 to 8.
Suppose I have manufactured my product and I got my value 7.5, 7, 6.9, and I have evaluated the observed pH is within the specification limit. That means my product is stable. If product having the temperature 25 plus minus 5, so I have to manage it 25 plus minus 5, 20 to 30. If mixing speed mentioned in the specification 250 rpm plus minus 50 rpm, that means 200 to 300 rpm के अंदर मुझे मिक्सिंग करना है. And during execution of my product, I have verified it is 250 rpm is observed, and after 250 rpm I have sent the sample to chemical analysis. During chemical analysis I have observed the result is ASE. ASE result. ASE means क्या है? जो हमारा एपीआई हम यूज करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. सपोज पैरासिटामोल फॉर्मुलेशन, वी आर यूजिंग द एपीआई पैरासिटामोल. तो पैरासिटामोल का क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. that particular parameter we are saying content uniformity, drug content uniformity. तो वो जो फैक्टर्स है, इसको केमिकल फैक्टर है, तो ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का लिमिट है. Within that limit, if our chemical result we have observed within the limit, that we can say the product is stable and there is no observations, there is no any quality issue observed in the product. Hence, the product can be released to the commercial market for distribution. Next is microbial analysis. Microbial analysis, one is bioburden analysis and is sterility analysis. Sterility factor means whether my product manufactured within the sterile environment, whether my product is satisfying the sterility specification, whether my product having no microbial contamination during processing, whether my product has not been contaminated any external sources during manufacturing. To evaluate these things, we are sending the sample to microbial analysis, and after getting the microbial analysis result, sterility result, satisfactory result, we are sending the product to the commercial market. So we are clear, my product is chemically and microbially stable. So there is no discrepancy. Discrepancy means consequence, issues. There is no discrepancy, no problem with my product. So I can deliver to the market this product, and this is my quality product. Everything, the product product is complies with the specification. Next, to ensure the critical contributing parameter are within the validated range and behaving as per process validation recommended. इसमें दो चीजें, critical contributing factor I have already explained. Factor and critical contributing factor, both are different things. Factor is different and critical contributing factor is different. Factor affecting the production and critical contributing factor affecting the production. The critical contributing factor are like mixing speed, in tablet case, blending, granulation, compression machine speed. In sterile manufacturing, it is mixing speed, pH range, temperature. These are critical contributing factor. If temperature range will be high, the product will be degraded. If the stirring speed will be low, the mixing will not be uniform and the assay variation will be observed. If pH will be acidic or basic, that impact to the entire batch. We cannot release the batch to the market. So these parameters we are validating in process validation.
The process validation is nothing but process performance qualification. And process performance qualification we are carrying out with 3 consecutive batches. Suppose I am giving an example. We are going to make the product paracetamol product. We will take 3 batches of paracetamol and we will plot a graph. We will prepare a matrix and trending to evaluate the similarity between the formulation. First batch, second batch, third batch. So, as said, Sir, I will sir, maybe a slide is not means change so that there is question in that was we can see. Student asking slide. for Quality of product is there in slide. now currently is definition quality and quality and Okay. Just I'll, one minute. That's why I've asked you. 1 minute. Quality of product. Right, just wait 1 minute. Now is it visible? Yes. Okay, now. So here, first is to ensure product quality through chemical and microbial analysis. That is I have already explained. Next, second step I am explaining to ensure the critical contributing parameters are within the validated range and behaving as per process validation recommendation. This process, what is the process validation? I am just explaining the process validation. What is the process validation? Process validation is nothing but process performance qualification. In the process performance qualification, we are considering each step of the process a particular product, whether every step complying our specification or not. So we are taking 3 consecutive batches of similar product. Example, I am taking a paracetamol batch. Suppose example, I'm just recently I'm taking example 1 batch I'm going to manufacture, that is Covaxin. Example, I'm very easily you can understand. Covaxin, I'm using the Covaxin batch. Covaxin batch number 1, Covaxin batch number 2, Covaxin batch number 3. 3 formulation, 3 batches I have taken. And what are the parameters? What are the active API, active pharmaceutical ingredient used in the product in 3 batches constant? Then mixing speed in batch 1, batch 2, and batch 3. I have to validate whether the mixing speed is as per the specification or not. In first batch, in second batch, and third batch. Then pH range in first batch, second batch, third batch. And like that, we are comparing the 3 batches data and critical parameter data, and we are evaluating whether the product is stable or not. And after the 3 batches, we are making the trend, and that trend we are sending to the regulatory authority for review. If the regulatory review passes, and if they are satisfied with our product, they are accepting the registration, and they're coming for the audit to the site, and they're conducting audit like USFDA, like TGA, MHRA, and WHO. These are the audit authority regulations, and they are coming to the site for an audit visit, and they are preparing. They are sending the notification before coming to the site. They're sending first the notification and agenda, audit agenda, and they're visiting site for facility audit, then product audit. So based on that, they are taking the product from the particular site. Next, to ensure product purity, efficacy, strength, potency, and safety being maintained periodically. That means they are verifying, we are verifying the product is completely stable. How product will be stable? The product purity. The pureness in the product should be there. Product efficacy, strength means efficacy means वो हमको जितना product का efficacy चाहिए, हमको जितना product चाहिए उसका efficacy it should be maintained. Strength means product का strength 0.25 mg, तो 0.25 mg तीनों में होना चाहिए. Potency, potential effect बराबर दिखाना चाहिए. It should be the product showing the
proper potency. हमारा कोविड-19 का जो मेडिसिन था कोवैक्सीन, हमको इंजेक्शन देने के बाद ये हमारा बॉडी में पोटेंशियल दिखाना चाहिए। तो वो जो वैक्सीन है हमको कोविड प्रिवेंशन करना चाहिए। तो पहले टेस्ट होता है, उसका फेज 1 फेज 2 फेज 3 टेस्ट होता है। उसके बाद वो टेस्ट सेटिस्फाई होने के बाद जाके कमर्शियल आता है, ऑर्डर आता है कि आप लोग बना सकते हैं। तो टेस्टिंग होता है, फेज क्लिनिकल टेस्टिंग। तो इसीलिए वो पोटेंशियल हम वेरीफाई करते हैं कि लैबोरेटरी में, क्लिनिकली चेक करते हैं कि क्लिनिकली ये फिट है नॉन फिट। नॉन फिट हुआ तो प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड। तो प्रोडक्ट को अलाउ अथॉरिटी नहीं मिलता है कि आगे बढ़ने के लिए। एक्सेप्टेड हुआ तो दे आर प्रोवाइडिंग द अथॉरिटी, दे आर प्रोवाइडिंग द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स हम कैसे प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, वन लाइफ इज इंपोर्टेंट फॉर अस। एक लाइफ इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। सपोज मैंने रॉन्ग प्रोडक्ट का पोटेंसी का मैंने इंजेक्शन दिया, तो व्हाट विल हैपन, that person will die, otherwise that person will suffer in adverse drug reaction. So that is also, that should satisfy, the product should satisfy, and safety should be there. Next, to ensure regulatory quality requirement, जैसे कि आपको बोला मैंने, यूएस एफडीए, यूनाइटेड रेगुलेशन जो हमारा पास है 21 CFR, आप भी इंटरनेट में जाएंगे देखेंगे 21 CFR मारेंगे, दैट इज यूएस एफडीए। हम लोग जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ 21 CFR। तो रेगुलेटरी का जो है, सपोज इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। हम मार्केट को जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद हम एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और ड्रेस हाउस में जाते हैं। मुझे जीन्स टी शर्ट खरीदना है, मैं जाके 5, 10, 15 टी शर्ट देखता हूँ, मुझे जो चॉइस होता है मैं लेके आता हूँ। और जीन्स जैसे भी मुझे जो चॉइस होता है मैं लेके आता हूँ। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का वही है, उनको जो पसंद होता है उस पे से प्रोडक्ट लेते हैं। It might be Cipla, it might be Glenmark, it might be Ranbaxy, it might be from Pfizer, it might be from any company. If they are identifying this company is providing quality product, definitely will take the product from the particular company. Okay, so we'll go for the next. Next is quality compliance. Are you getting me, all of you? Yeah, any doubt will be there. Are you getting me, all of you? If you have any doubt, you can ask me immediately. Okay, so next slide is quality compliance. So how will you assure the quality compliance? In the product we are manufacturing, having no deviation, no OS, OT, no microbial excursion. These are 3 important things. Based on that, you can assure the product compliance, the quality compliance. Deviation. What is deviation? Suppose आप लोग कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज में आपको बोला गया, so you can come to college and you have to go to the pharmacognosy laboratory instead of pharmaceutics laboratory. आप लोग आके चले गए कॉलेज को, आप जाके फार्मास्यूटिक्स लैबोरेटरी में बैठ गए सब लोग, एवरीबॉडी, बट nobody has gone, nobody went to the pharmacognosy laboratory. But we have instructed, our professor instructed, you have to go to the pharmacognosy laboratory instead of pharmaceutics laboratory. But you people all went to the pharmaceutics laboratory. That you did a mistake, you deviated the instruction. That you have deviated the instruction, and that is called deviation. In same way, in pharmaceutical, I have the manufacturing specification, I have the manufacturing formula record, I have the batch manufacturing record instruction. If I have deviated anything from the instruction during my manufacturing process,
I have to file a deviation against the batch. And I have to assess the impact. I have to evaluate the risks of the deviation. I have to assess the impact of the deviation to batch. I have to assess the impact of the deviation to the market. I have to assess the impact of the deviation to the patient. Deviation is nothing but to deviate from the predefined approved specification is called deviation. Okay. Next, OOS and OOT. OOS OOT means क्या है? Out of specification and out of trend. एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हमने घर में कॉलेज जाने के टाइम पे मेरे पापा को मांगा, मुझे 20 रुपीज चाहिए. पापा आई वांट 20 रुपीज टुडे, बिकॉज मैं वही 20 रुपया में मैं खर्चा ही करूंगा. मेरा जो भी है रास्ते में जाऊंगा आऊंगा, उसके बाद मैं कुछ बचेगा तो आपको रिटर्न कर दूंगा मैं. पापा ने मुझे बोला कि देख, ये 20 रुपीज जो दे रहा हूं, तुम 17 रुपीज खर्चा करने का और तो 3 रुपीज है मुझे रिटर्न करने का है. बट तुझे आज तो दिन भर जो खर्चा करने का है 20 रुपीज के अंदर ही खर्चा करने का है. 21 नहीं होगा, मेरे पास नहीं है 21. तो हमको दे दिया 20 रुपीज. मैंने मार्केट गया, कॉलेज गया, रास्ते में देखा, मैंने एक आइसक्रीम खा लिया जिसका दाम है 15 रुपीज. और कितना बचा मेरे पास? 2 रुपीज बचा है 17 रुपीज, 17 रुपीज होने के लिए. मैंने देखा मुझे एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेना है, सर मंच चॉकलेट लेना है. मंच का 5 रुपीज वाला आता है, तो मुझे वो लेना है. लेकिन मेरे पास तो 20 रुपया है, 20 रुपया खर्चा हो जाएगा. पापा ने बोला है मुझे 17 रुपीज खर्चा करके मुझे 3 रुपीज रिटर्न करना है. तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई अब डेयरी मिल्क तो ये जो मंच चॉकलेट नहीं ले सकता हूँ. 3 रुपया वाला कुछ चॉकलेट है क्या? 2-3 रुपया वाला चॉकलेट. तो उन्होंने मुझे 2-3 रुपीज वाला चॉकलेट एक दिया. मेरा कितना हो गया? 18 रुपया खर्चा हो गया. 15 के बदले 18 रुपया खर्चा हो गया. तो मैंने क्या किया, मुझे ट्रेंडिंग कितना बोला गया था करने के लिए, मुझे रेंज कितना दिया गया था खर्चा करने के लिए? 17. मैंने खर्चा कर दिया 18. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ओओटी. मैंने ट्रेंड के बाहर चला गया. ओओटी आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, मैंने ट्रेंड के बाहर चला गया. पापा ने बोला था 17 रुपीज के अंदर खर्चा करना है, बट आई हैव एक्सीडेड द इंस्ट्रक्शन. हम ट्रेंड के बाहर चला गया. आफ्टर देन सपोज आई हैव डिमांड टू द मार्केट, I have to explain that 20 rupees. I don't have other option. So in that case, I asked the shop, please provide me a dairy milk chocolate. The cost of dairy milk chocolate is 10 rupees. I told the person, please provide me the 10 rupees chocolate. Tomorrow I will provide you 5 rupees. Because I am having 20 rupees, only 5 rupees I am having. Tomorrow I will come, I will provide you 5 rupees, so that 5 rupees will be paid tomorrow. That is OOS. Because मेरे पास 20 रुपीज है, लेकिन मैंने खर्चा कर दिया 25 रुपीज. दैट मीन्स मैंने स्पेसिफिकेशन के ऊपर चला गया. पापा ने बोला था 20 रुपीज तेरे पास है, जो 20 रुपीज तो खर्चा करके घर आना है, बट मेरे पास पैसा नहीं है. मैंने आउट ऑफ ट्रेंड चला गया और मैंने स्पेसिफिकेशन के आउट भी चला गया. दैट इज मीन्स out of specification. Same thing in pharmaceutical company, we are having a specification for assay, product assay limit 1052 110, 1052 110 assay limit. If product assay observed 114, then it is called OS in the batch. So that should be investigated properly, and the cause of the increasing of the assay limit shall be evaluated through investigation. And impact shall be evaluated whether the batch will be released to commercial market or not. That depend upon the impact analysis and impact assessment. So after
identification of the root, the cause of the OS, then we are taking a proper corrective and preventive action to prevent the occurrence in future. In same thing, same in case OOT, मेरा प्रॉब्लम होने वाला है कि 17 रुपीज खर्चा करना है, बट मैंने मुझे 18 रुपीज खर्चा कर दिया, तो ओटी हो गया। तो ओटी होना नहीं चाहिए। आज मैं 17 80 पापा का बात नहीं मान के मैं खर्चा कर दिया, कल मैंने 20 के ऊपर खर्चा कर दूंगा, कल 30 हो जाएगा, इसका कोई लिमिट रहेगा नहीं, तो कल मैं घर से गाली सुनूंगा मैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ओटी के लिए also we are conducting the investigation and we are identifying the cause of the OOT and we are plotting the preventive and correcting and preventive action for OOT. Okay. Next is no microbial excretion. Suppose मेरा product में I have manufactured the product in a aseptic area. So whether my product having no microbial contamination, if I found any contamination during incubation period. Incubation means 7 days incubation, 5 to 7 days incubation period in microbiology department. They're incubating the product and they're checking whether any microbial contamination develops in the product. In that case, they are initiating an investigation, and that investigation is nothing but OAL. And that investigation carried out to detect the organism that might be bacteria, that might be fungus. If bacteria detected, that the investigation process is different. If fungus detected, the investigation process is different. Then to identify the cause of the contamination, we are conducting the investigation to assure quality compliance. If the product having actual contamination, we are degrading the product, we are not releasing the product, we are destroying the product. If the product pass the specification, if the contamination source is different and product is not contaminated, a particular media plate is contaminated, in that case we are releasing the batch. Are you getting me? If you have any doubt, you can ask directly. Everybody clear? Yes, sir. Okay, no doubt. So we'll go to the next slide. Next is quality decision. So what is quality decision? Quality decision made based on the product quality and proper compliance. I have identified the problems. I have resolved the problems. I have identified the CAPA, corrective and preventive action, and I found my. I have again sent the product, sample to the quality control and microbiology department based on the satisfactory chemical result, satisfactory microbial result, and satisfactory product behavior and trend analysis. I have assured that my product is now stable. I can release the product to the market. So product is under compliance. So this is the quality decision, and the decision has been given by site quality head. Here is the assurance. Initial part, it was the definition of quality, and it is the assurance. What is assurance? To assure product quality through chemical and microbial analysis within the standard limit, to assure the critical contributing parameter within the validated range and behaving as the process validation recommendation, and same shall be approved by QA.
To assure product purity, efficacy, strength, potency, and safety being maintained periodically, and same shall be approved by QA. So QA is the authority. QA is the authority to provide the batch decision. So site quality head and QA head is providing that quality decision on the product. So to assure the regulatory quality requirement to meet the standard, and the same shall be approved by QA. And last one is to assure the quality standards maintained throughout the product processing, and same shall be approved by QA. Everything in each and every aspect, QA having the main role to provide the batch decision and product quality decision. And last one is to ensure the product quality definition of QA. Now, complete definition of QA, I'm saying to ensure the product quality and to assure the quality attributes scientifically proved through a rationalized method with authenticate evidence as per regulatory requirement by designed quality concept is the definition of quality assurance. So this is the definition. Everybody, you go through the definition. If you have any doubt, you can ask your doubt. I will clear immediately. This is the definition of quality assurance. Finally, to ensure the product quality and to assure the quality attribute scientifically proved through a rationalized method. Scientifically proved means जैसे ट्रेंडिंग एनालिसिस हम करते हैं, बैच बनाया, बैच लिया और वो बैच में जो पैरामीटर्स है हमने इवैल्यूएट किया, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड बैच जो के थ्रू रेशनलाइज मेथड, जो मेथड हमको दिया गया है, जो स्पेसिफिकेशन हमको दिया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमको दिया गया है, उसको ये कंप्लायंस, इट इज अंडर द कंप्लायंस मींस सैटिस्फाई किया वो प्रोसेस को मेरा प्रोडक्ट विथ ऑथेंटिकेट एविडेंस हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, जो एविडेंस मिला हमको द बैच इज स्टेबल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मींस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डब्ल्यूएचओ होने दो, यूएसएफडी होने दो, एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन लोगों ने क्या करते हैं, ये बैच का डिसीजन देखते हैं और वो बैच को रिव्यू करते हैं. इफ दे आर सैटिस्फाइंग, दे आर कमिंग फॉर द ऑडिट एंड दे आर टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी बाय डिजाइन्ड क्वालिटी कॉन्सेप्ट. और क्वालिटी डिजाइन कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैच बनता है. बैच बनने के बाद उसका क्वालिटी पैरामीटर वेरीफाई किया जाता है. क्वालिटी पैरामीटर वेरीफाई करने के बाद वी आर ensuring that product is under compliance and this is the quality product. So the regulatory authority then conducting audit and then taking the product to distribute the commercial market. And this is all about the quality assurance definition. Before that, I have explained all the things, and this is a single line and summary of the complete explanation. So now scope of quality assurance. क्वालिटी एश्योरेंस में डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, उसका सब डिपार्टमेंट क्या है. इट इज अंडर स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. फर्स्ट इज आईपीक्यूए, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस. सेकंड इज लैबोरेटरी क्यूए. थर्ड इज वैलिडेशन क्यूए. फोर्थ इज क्यूएमएस क्यूए and fifth is audit and compliance QA. These are 3 to 5 subsection, and in the particular subsection different expertise personnel are working to provide the quality decision and to assure the compliance. Now what is the role of IPQA? In process quality assurance का रोल क्या है? इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस का रोल ऐसा रहता है कि बैच प्रूफ वेरिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग एनी बैच इन द सब फ्लोर, इन मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर, इन पैकिंग सेक्शन.
IPQA verifies the batch proof. If everything is okay, in batch proof, what they are verifying? The product code is verifying, overfitting matter they are verifying. They are verifying the batch number, expiry date. If everything is okay, they are providing the clearance to proceed further. Line clearance, हम बोलते हैं कि अपना लाइन क्लियर हो गया, आगे बढ़ा नहीं, हटा नहीं, मेरा लाइन क्लियर. द लाइन क्लियरेंस, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर दूसरा प्रोडक्ट कल बनाएंगे, इन बिटवीन दैट एक लाइन क्लियरेंस एक्टिविटी आता है. जो लाइन क्लियरेंस में हम लोग चेक करते हैं द प्रीवियस प्रोडक्ट रेसिड्यू और प्रीवियस प्रोडक्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द लाइन. द लाइन शुड बी properly cleaned and labeled with proper status label. If there is no previous product in the line and everything is fine, a line has been cleaned properly as per SOP, so in that case, IPQA gives the line clearance for further next product. If previous product residue will be there, it will lead to the cross contamination, and cross contamination will lead to the product failure, next product failure. So it is a critical activity. Next is in-process verification. In-process verification means डिजोल्यूशन में, डिसइंटीग्रेशन में, ये सब जो रहता है टैबलेट केस में, इसको वेरिफिकेशन करता है, उसका लिमिट है, वो लिमिट को वेरीफाई करता है, वो लिमिट के स्पेसिफिकेशन अंदर वो रहता है नहीं रहता है, तो वो वेरीफाई करता है. इन सॉल्यूशन केस, सस्पेंशन केस, वो फील वॉल्यूम चेक करते हैं, लीक टेस्टिंग वेरीफाई करते हैं. इन टैबलेट केस वो पाउच का लीक टेस्टिंग भी करते हैं. ये सब है इन प्रोसेस चेकिंग. तो फेज वाइज बैच में जो बैच का क्वालिटी फेज वाइज एवरी स्टेप चेकिंग होता है, उसको करता है IPQA. देन फाइनल करने के बाद बैच रिलीज करता है. बैच रिलीज मींस जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट को रिलीज करता है. कैसे? बेस्ड ऑन द क्वालिटी कंप्लायंस डिसीजन. उसमें डेविएशन नहीं है, OS नहीं है, OT नहीं है, देयर इज नो एनी इंसिडेंट डेविएशन, and there should not be any non compliance in the batch. तो वो क्यों एश्योर करता है, तब बैच रिलीज करता है कमर्शियल मार्केट को. बैच जाकर रजिस्टर होता है, मार्केट को जाता है, उसको लोग लेते हैं. जैसे कि आप लोग मेडिसिन शॉप को जाकर मेडिसिन लेते हैं, तो बैच रिलीज होने के बाद ये सब होता है. देन लैबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस, लैब क्यूए. लैब क्यूए क्या करता है? लैबोरेटरी एनालिसिस, डाटा वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल. QC माइक्रो डिपार्टमेंट का जो टेस्ट रिजल्ट, QC डिपार्टमेंट का जो टेस्ट रिजल्ट है, उसको लैबोरेटरी QA एनालिसिस करता है और अप्रूव भी करता है. वो अप्रूव करने के बाद वो रिलीज करता है लैबोरेटरी से. लैबोरेटरी द प्रोडक्ट complies with the chemical and microbial specification. Therefore, the product is stable. We can release the product to the commercial market. Then, my laboratory quality assurance verifies OS and OT investigation. OS and OT जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग होता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से इनिशिएट होता है, उसको वेरीफाई करता है, रिव्यू करता है लैबोरेटरी QA टू एंश्योर कंप्लायंस. ये रोल लैबोरेटरी QA का. बाद में वो प्रोडक्ट को रिलीज करता है. नेक्स्ट है वैलिडेशन क्वालिटी एश्योरेंस. वैलिडेशन क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द वैलिडेशन क्वालिटी एश्योरेंस? What are the equipment available in the shop floor for product processing? वो इक्विपमेंट को वैलिडेट करता है. फर्स्ट इज इक्विपमेंट वैलिडेशन. सपोज मेरे पास कंप्रेशन मशीन है, मेरे पास ब्लेंडर है, शिफ्टर है, कंप्रेशन मशीन का क्वालिफिकेशन करता है इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन. मेरे पास वायल फिलिंग मशीन है, वायल फिलिंग मशीन का इक्विपमेंट वैलिडेशन करता है, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन बोलते हैं उसको, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन करता है. तो इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन करने के बाद वो ऑथराइज होने के बाद जाके हम इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए. फिर इक्विपमेंट एवरी 3 ईयर के बाद रिक्वालिफिकेशन होता है. एवरी इक्विपमेंट का हम वेरीफाई करते हैं, प्रोसेस वेरिफिकेशन जैसे करते हैं एवरी 3 ईयर के बाद, फिर इक्विपमेंट को रिक्वालिफिकेशन करते हैं. देखते हैं कि जब मेरा इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन हुआ था सब पैरामीटर उधर रेंज में है या इक्विपमेंट में कुछ इश्यू है या नहीं है. तो एवरी 3 ईयर के बाद हम लोग रिक्वालिफिकेशन करते हैं. Next is process validation. Already I've explained you process validation, nothing but process performance qualification. 3 batches we are taking for validation, and we are gathering the data of 3 batches. We are preparing the matrix. Based on the matrix,
We are gathering the scientific data, and based on the scientific data, we are ensuring the parameters are within the specified range, and we are releasing the batch to the commercial market, and we are sending for the batch registration to the regulatory authority. That is the process validation. Computerized system validation. We are having SCADA system, सुपरवाइजर कंट्रोल सिस्टम, स्काडा सिस्टम. जैसे हमारे घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लैपटॉप स्क्रीन, ऐसे हर एक इक्विपमेंट के सामने एक स्काडा है. स्काडा मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन, विंडोज स्क्रीन है. उसमें सब वो मशीन चलाने के लिए उसमें सब पैरामीटर है, कितना स्पीड रख सकते हैं और मशीन कितना देर तक चलेगा. तो सब उसमें सब क्या होता है कि वो वैलिडेट होता है स्काडा सिस्टम. तो उसको जीएसपी वैलिडेशन, जीएसपी बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन को. And computer system को validation IT person with association with quality assurance, IT QA, IT and with production, ये तीनों मिलके ही करते हैं validation. And वो computer system validation करने के बाद वो assure करते हैं कि जो computer system equipment में लगा हुआ है, it is working well and providing the data accuracy. For data accuracy के लिए audit trial, जो data accuracy के लिए ये computer system validation हम perform करते हैं और इंश्योर करते हैं द कंप्यूटर सिस्टम इज कंप्लाइज विद द 21 CFR फेडरल कट. 21 CFR यूएसएफडी का रेगुलेशन है. 21 CFR हम एग्रीमेंट में चेक करते हैं, उसका असेसमेंट का जीएक्सबी असेसमेंट करते हैं और उसको हम फाइनली ऑथराइज करते हैं कि दिस SCADA सिस्टम, दिस कंप्यूटर सिस्टम इज वैलिडेटेड टू यूज इन द product processing. That's all. Next is area and facility validation. Area, suppose मेरा manufacturing area है, packing area, filling area, blending area, compression area, coating area, इस जो डिपेंडेंट एरिया है, एरिया का क्वालिफिकेशन किया जाता है. उसमें टेम्परेचर कितना रहना चाहिए. जैसे एसी लगा दिया घर में, हमने 60 में लगाया, 20 में लगाया, टेम्परेचर वो सेट हो गया, रूम के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री है. इससे हमारा सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि 22 डिग्री रहता है, कहाँ पे 18 डिग्री चाहिए टेम्परेचर, 18 डिग्री रहता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी रिक्वायरमेंट है. तो ईच पैरामीटर का लिमिट एस्टेब्लिश करके एरिया पैरामीटर जो है, एरिया पैरामीटर को हमको एस्टेब्लिश करना पड़ता है. उसके बाद एरिया को स्टेबल किया जाता है एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट. एंड फैसिलिटी डायग्राम बनाया जाता है. वो फैसिलिटी के अंदर डिफरेंशियल प्रेशर, एक रूम और दूसरा रूम के अंदर कितना प्रेशर रहना चाहिए वो भी एस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग एरिया क्वालिफिकेशन. टेम्परेचर मैपिंग स्टडी होता है, ये एरिया का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो वो मैपिंग स्टडी होता है. मैपिंग स्टडी में टेम्परेचर वेरीफाई किया जाता है कि इतना टेम्परेचर मेरा अचीव कर रहा है और मेरे एरिया के टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इतना ही हुआ है. वो पैरामीटर, एरिया का पैरामीटर ठीक करने के बाद हम लोग को एरिया में प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि मेरा प्रोडक्ट को इम्पैक्ट रहेगा नहीं. मेरा रेगुलेटरी गाइडलाइंस यही बोलता है और मैं वैलिडेशन, एरिया वैलिडेशन ऐसे किया और रेगुलेटरी गाइडलाइंस को मेरा एरिया वैलिडेशन कंप्लाइज होता है, तो देयर इज नो इशू फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया. नेक्स्ट इज QMS, क्वालिटी एश्योरेंस, QA/QMS. QA/QMS क्या करता है, मैं ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, आई विल गो पॉइंट बाय पॉइंट. Deviation investigation, the QA/QMS investigating the deviation with association with production investigator and QA investigator. Both are mutually conducting the investigation, and QA/QMS reviewing the investigation and approving the investigation. Same OS/OT manufacturing investigation also QA approving, reviewing and approving the investigation. Change management. Change, what is change management? If any changes made in the pharmaceutical company, it might be document, it might be equipment, it might be facility, it might be anything. It should be tracked through a change management and change control procedure. And change control having a specific change control number. Through that change control number, the change has been placed in the pharmaceutical manufacturing section. If packing related change control required, so that change control, equipment related change control required, so we are
categorizing the change control as equipment change control. If facility related change control required, we are categorizing it as facility. If in document related SOP, batch manufacture record, any document related change control required, so it is categorized under document change control. So like that, change control process is a major and critical process which controls the changes in the pharmaceutical manufacturing, packing and filling area. Next is risk assessment. What is risk assessment? मुझे क्या क्या रिस्क है मेरे ऊपर? What are the risks on me, my product, that I need to evaluate before processing my product? मैं कल रास्ते पे जा रहा हूं, गाड़ी चला कर जा रहा हूं, मैं हेलमेट पहना नहीं, उधर बहुत सारे रिस्क है. मैं गिर जाऊंगा तो मेरा सर टूट जाएगा और ब्लीडिंग होगा, मेडिकल में जाऊंगा, बस. नहीं तो मेरा हाथ पैर टूट जाएगा गाड़ी से गिर के, मेरा गाड़ी भी टूट जाएगा. इस रिस्क से बिफोर ड्राइविंग एंड हेलमेट यूज नहीं करने से क्या होता है, ये रिस्क. तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, वो रिस्क को मिटिगेट करूंगा. मैं आई हैव टू यूज हेलमेट, आई हैव टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक दैट. मेरा ग्लोव्स जो भी पहन के जाना है गाड़ी चलाने टाइम पे, और मैं कितना स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा वो भी फिक्स मुझे ही देखना है, तो कल एक्सीडेंट नहीं होगा. दैट इज द रिस्क मिटिगेशन. The risks shall be evaluated, shall be mitigated. And a risk mitigation ये भास्ट चैप्टर है, ये सब एक एक लाइन एक एक भास्ट चैप्टर है, तो ये तो 5 मिनट में नहीं बता सकता हूँ. ये एक लाइंस 5 क्लासेस है. तो इसीलिए रिस्क असेसमेंट जो है, हम रिस्क को असेस करना पड़ता है इनिशियली बिफोर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट. तो इफ एवरी रिस्क इज acceptable, then we are proceeding for the manufacturing of the product. If risk is not acceptable, we are mitigating the risk with proper compliance. देन इम्पैक्ट असेसमेंट. ये तो रिस्क है. रिस्क इम्पैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मैंने हेलमेट में नहीं पहना है, मैंने तो रिस्क ले लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं मेडिकल जाऊंगा, आई हैव टू एडमिटेड इन द मेडिकल, आई विल फेस एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होने के बाद मेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, एंड एवरीथिंग आई विल बी इन द सीरियस कंडीशन. तो मुझे रास्ते में गिरने के बाद तो मेरा ब्रेन रप्चर हो जाएगा. तो ये है उसका इम्पैक्ट. उसके बाद क्या होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद माइट भी मेरा सेंस आ सकता है, नहीं आ सकता है. दैट इज द इम्पैक्ट. सो रिस्क असेसमेंट होगा, रिस्क के बेस में जो है इम्पैक्ट को हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इम्पैक्ट को भी मिटिगेट करना पड़ेगा. देन उसके अगेंस्ट में हमको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है रिस्क एंड इम्पैक्ट के ऊपर. करेक्टिव मींस इमीडिएटली मैंने क्या किया, मैं सपोज गिर गया, मैं क्यों गिरा, उसको कल से नहीं गिरना चाहता हूं मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इमीडिएट करेक्ट करना पड़ेगा उस जगह पे. मैं ये किया था, मैं गिर गया, कल से ये करूंगा नहीं, इमीडिएट करेक्शन. बट इन फ्यूचर में कैसे नहीं गिरूंगा, दैट इज प्रिवेंशन. सो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इट इज a big chapter, corrective and preventive action. नेक्स्ट इज ऑडिट कंप्लायंस क्वालिटी एश्योरेंस. ऑडिट कंप्लायंस क्वालिटी एश्योरेंस वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट. हमारे पास दो टाइप का ऑडिट रहता है. एक है तो इंटरनल ऑडिट, अंदर से हमारा सिक्यू का ऑडिट रहता है, अंदर का क्वालिटी टीम वो भी ऑडिट करते हैं. क्वालिटी ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट कंप्लायंस रहता है, उसका यूजर डिपार्टमेंट वो कंप्लाई करके देता है. उसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिट रहता है. मैं ऑलरेडी आपको बोल दिया, WHO, USFDA, MHRA, TGA, ये सब ऑडिट अथॉरिटी, ये लोग बाहर से आते हैं, आके ऑडिट करते हैं साइट पे. ये है एक्सटर्नल ऑडिट. देन वो लोग ऑडिट करने के बाद दे आर प्रोवाइडिंग द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, एंड दैट ऑडिट ऑब्जर्वेशन द पर्टिकुलर साइट इज कंप्लाइंग, trying to comply the audit observation. That is audit observation and compliance. Then compliance submission for inspector review. The external inspector conducted the audit at the particular site and providing the observation. That observation comply करके QA वो डाटा रिव्यू कर भेजता है. भेजने के बाद क्या होता है कि वो रिव्यू करता है एक्सटर्नल अथॉरिटी. सपोज वो सेटिस्फाई है तो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं. एक्सेप्ट करने के बाद हमको प्रोडक्ट के लिए ऑफर देता है कि प्रोडक्ट तुम बना सकते हो. एक्सेप्ट नहीं करता है तो प्रोडक्ट होल्ड कर देता है एक्सटर्नल ऑडिट. तो होल्ड करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं साइट पे.
तो वो होल्ड रहता है, उसे कंप्लाई करने के बाद जाके हमको प्रोडक्ट का अथॉरिटी मिलता है कि बनाने के लिए। तो ये है कंप्लायंस सबमिशन एंड इंस्पेक्टर रिव्यू। देन सीक्यू ऑडिट। सीक्यू ऑडिट नथिंग बट हमारा कॉर्पोरेट क्यूए, वो ऑडिट करने के लिए आते हैं साइट को, साइट में ऑडिट करके ऑब्जर्वेशन देते हैं बिफोर ऑडिट। तो उनका पॉइंट कंप्लायंस होने के बाद जाके एक्सटर्नल ऑडिट होता है। So are you getting me, all of you? Are you getting me? Okay, good. Objective of quality assurance. So what are the objectives? To maintain the quality throughout the product processing and to assure the regulatory needs fulfill as per the guidelines. Regulatory guidelines को fulfill करना quality assurance का objective रहता है हर टाइम। तो regulatory guidelines क्या है? WHO guidelines है, FDA guidelines है, MHRA guidelines है, UK TGA, ये जो है ये सब गाइडलाइंस है, उसको गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करना क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। अभी हम लोग देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस का ऑर्गेनोग्राम कैसे रहता है, उनका फैमिली कैसा रहता है। जो परिवार बोलते हैं हमारा फैमिली रहता है कि पापा माँ भाई बहन रहते हैं, तो उसी हिसाब से क्वालिटी ऑर्गेनोग्राम कैसे रहता है। ये डायग्राम देखिए आप लोग। स्टार्टिंग पोजीशन जो रहता है क्वालिटी एश्योरेंस का, ऑफिसर रहता है, उससे नीचे भी है जूनियर ऑफिसर, नेक्स्ट ऑफिसर, नेक्स्ट रहते हैं एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट रहते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, नेक्स्ट डेप्यूटी मैनेजर, नेक्स्ट क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस हेड, नेक्स्ट इज साइट क्वालिटी हेड, नेक्स्ट इज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट क्वालिटी, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट क्वालिटी। ये जो रहता है, जैसा कि मेरा छोटा भाई, उसके ऊपर मैं हूं, उसके ऊपर मेरा बड़ी बहन है, उसके ऊपर मेरा पापा है, ऐसे। एंड एवरीबॉडी रिपोर्ट टू एवरीवन। ऑफिसर रिपोर्टिंग करता है, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के अंडर में रहता है, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर के अंडर रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी मैनेजर के अंदर रहते हैं, डेप्यूटी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये रहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के अंदर में। ऐसे नीचे नीचे जो है उनके अंडर में रहते हैं। इट इज कॉल्ड एज क्वालिटी एश्योरेंस फैमिली, एक परिवार जैसा है। और एवरीबॉडी रिपोर्ट टू द सीनियर अपर लेवल इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। I'll just go through the summary role and responsibility. To impart training for new joiner. Suppose one new joining किया, उसको ट्रेनिंग देता है। To handle site training matrix. टोटल साइट में ट्रेनिंग कितना ट्रेनिंग हुआ, कितना कितना बाकी है, how many people trained, how many people on still not trained, I have to train them. That is to handle site training matrix, to handle IPQ activities, to handle validation activities, to handle QMS activities, to handle internal as well as external audit, to handle site compliance and regulatory compliance. Already I have explained all the things. This is a summary. Next, to handle the quality system and to ensure site is under compliance as per regulatory guidelines, to ensure the quality attributes are met, to investigate, ensure non-conformance, observe in the software and QC, deviation, OS and OT, to investigate the root cause of the same, to analyze risks as per ICS Q9 and mitigate the risks with current standards. To comply the external audit findings, to release the manufactured batch by reviewing with standard specification, to ensure computer systems are adequate to assure the product quality, to prepare and review the APR, annual product review record, to assure CGMP standards are adequate to maintain site quality as per regulatory requirement, to maintain good documentation practice. So these are all about the QA. And if you have any question right now, you can ask me.
for your doubt clearance. I have done with my training session. It's all about Define Pharma, and we care for all of you periodically. And these all the things are every lines are one chapter, and it will take 5 classes each line. Deviation 5 classes, OSOT 5 classes. All the if it is if I'll go through the go to the deep, it will not take 5 minutes. It will take 5 classes. So that's why overall I have explained you about the quality assurance, and this is all about the quality assurance. If you have any doubt, you can ask me now for the clearance of your doubt.